नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। केएस मनी का ये प्रोग्राम डीएम डिजिटल के स्टूडियो से असलम जलाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये प्रोग्राम पिछले 3-4 हफ्ते से आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा सका। उसकी रीज़न कि ये डीएम जो नई बिल्डिंग में यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ये प्रोग्राम पेश ना कर सके। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम पिछले चंद बरसों से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसमें जो भी नए नए कवानीन कस्टमर एक्साइज या मनी ट्रांसमिट के हवाले से आते हैं, हम आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। सबसे पहले इमरान असलम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जनाब ज़ाद साहब हमारे जो दूसरे नए मेहमान काफ़ी अरसे के बाद आज फिर ये स्टूडियो में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको दोबारा फिर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन आप मनी एक्सचेंज के बारे में हमसे जो भी सवालत करना चाहें तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तारफ़ कराता हूँ इमरान असलम का, जो कि केएस मनी के डायरेक्टर भी हैं और कंप्लाइंस डिपार्टमेंट इनके सपोर्ट है। इमरान भाई, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। Recently, for the last 2-3 months ago, you have launched a new product, UBL. Would you like to explain how you're going on to this? Well, it's going very well. We started off small as we wanted to, and I think the growth of the business is beyond our expectations. I think we've hit our targets within what we expected to do, sort of third quarter of the year within the first quarter. So what we were thinking we would be hopefully remitting to Pakistan by the end of the year, we've done within 2 months. So it's fantastic. And I think the service in its entirety is getting better. There have been some teething problems which we were aware of, which we knew there would be because it's such a big network in Pakistan. But they're working aggressively to filter out these problems and fix them, which we're working with them to do so. But overall, I'm very happy with it. I think it's going really well. You just mentioned that you have a teething problem. Could you explain to the viewer that what sort of teething problem was? There's various. No, I'd say 95% of problems we have been encountering have not been a technical issue. They've not in essence been anyone's fault, but the lack of perhaps information given by the agent to the beneficiary in Pakistan. What you have to remember, people in this country are used to remitting via perhaps one or two specific companies that deal with Pakistan, and they're used to the trends of remitting that way. Now with when you come to using a banking system, it's slightly different. You have to ask for different information, you have to provide different information. So we have to educate the people, not only in the UK but also receiving in Pakistan. And that's where most of the problems have been incurring. There have been issues with certain branches that are not up to date with this new COC, which stands for cash over the counter facility that we provide with UBL. So we're educating and training people as we've launched a new product, and I think we've done exceptionally well. But with any new product, with such a vast network, you're going to have these problems. But we're overcoming them, and the facility in itself and going through the bank is fantastic. And I think overall, not just the facility it provides, but the rates and the free service we provide, you can't really touch it. And this teething problem, which you said you just have overcome all these problems, what is the reason for these teething problems? For example, say someone provides an incorrect CNIC number. One digit can be wrong. Shanasti card number. Even human error is the majority of problems. The beneficiary goes into Pakistan, for example, goes into the bank, they ask for the wrong information. Don't forget, a bank doesn't just do home remittance, it's a new product for them. Cash over the counter COC is a new product for UBL, as well as for us. So the understanding, the time difference, when a beneficiary arrives at a bank, they've got to understand, look, it's a new product, they've got to give the correct information, ask for the specific PIN number, and give the bank, a chance to solve the problems. We also have set up helplines specific for the needs of the beneficiary. So a lot of it is human error, albeit I admit there are problems which happens no matter who you use, whether an exchange company or a banking system. If I was to choose, I would choose a
a bank channel hands down over an exchange company. One, because where your money actually goes, which channels it goes to get to the beneficiary. It's as transparent as possible. Plus the rates, the exchange companies just cannot compete with them. You know, we are getting exchange direct from the interbank. There's no exchange company, so in essence, you don't have that cut come to you, and you offer it to your floor level. You're saying that the bank rates are better than any exchange company? Well, yeah, of course, because the exchange companies get their rates from the banks as well. So the senders are more benefiting sending Who through. benefits ultimately is we don't keep that, we pass it on. Exchange companies keep that little bit because that's where they make their money. Could you explain a little widely? I mean, for example, we in the morning receive a rate from the bank. We then get it off the SBP, the live interbank feeds. The interbank feeds is where the banks trade between themselves. Mhm. We get a specific amount in the morning, both from an exchange company and a bank. Now there's a big difference between perhaps an exchange company and a bank. Let's for argument's sake, 81 rupees per dollar, because we trade in dollars. That 81 you'll perhaps get from a bank, but from an exchange company you will get 30. So for each dollar there's a 70 cents difference. Mhm. And when you calculate and convert it, it can be up to 1 rupee difference. It's a hell of a difference in It's a massive difference. Mhm. So how do you compete with that? Well, you can't. This is the simple answer. And not only that, we provide our service totally free. How do you go about competing with that? You can't. No, and I think the ethos and the whole policy of the state bank or whoever are to bring home remittance via the banking channels. That's my opinion. I think they're aggressively trying to do that. इमरान साहब मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि कॉलर हमारे साथ है. हेलो. जी अस्सलाम जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली सिद्दीकी बोल रहा हूँ. वालेकुम सलाम सर, आप तो रेगुलर कॉलर हैं हमारे. कैसे हैं आप? हेलो. आज आप बताएं आपकी किस चीज़ की तारीफ की जाए, क्योंकि आज बहुत चमक रहे हैं माशाल्लाह. ये सिर्फ आपकी वजह ही है सिद्दीकी साहब, जो कि आप हमेशा ही जब भी ये प्रोग्राम होता है हमें ज़रूर कॉल करते हैं. आज बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा देखकर, काफ़ी दिन की हाजिरी के बाद आज आप वापस आए. ये मैंने एक्सप्लेन किया था इस प्रोग्राम के शुरू होने से कि चूंकि ये डीएम वाले नई जगह पे मूव हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो गैप रहा है. इंशाल्लाह आइंदा ये 12 के बजाय 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू करेगा. अगर कोई चेंजिंग आई तो हम बता देंगे आपको. जी बड़ी मेहरबानी. और आपकी सेहत ठीक है? सब जी कारोबार अच्छा है? जी अल्लाह का करम है. थैंक यू वेरी मच सर Thank you फॉर very much. कॉलिंग. Thank थैंक you. यू. खुदा हाफिज. Imran, before I come back to you again, I'd like to have a few questions to Mr. Zahid, who has been waiting very. Zahid साहब, आप काफ़ी अरसे के बाद हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं. बड़े कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे हैं, बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं. तो ख़ास बात है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है. लोगों की मदद के लिए आए हैं. अच्छा जी. तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है. जैसे इमरान भाई बता रहे हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वहाँ बैंक में जाते हैं तो वो उन्हें सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं होती. जी. अगर वो एजेंट जो भी एजेंट है सही तरह इन्फॉर्मेशन दे और डिटेल सही उनसे ले, और कार्ड को जो नंबर, जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है, सही तरह ले के आगे उन्हें सही तरह बताए कि ये पिन नंबर है और ये जो पेमेंट है कैश ओवर द काउंटर है. हालांकि ये छोटी सी बात है जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर या बेनिफिशरी है वो परेशान होता है. तो मैं एजेंट हजरात से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दें. COC मीन कैश ऑन काउंटर और पिन कोड वगैरह, और उनको कहें, एडवाइस करें कि उनका शनाख्ती कार्ड जो है उनके साथ होना चाहिए. इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात ये भी है ना कि कुछ बैंक वाले भी इस में नए हैं. जो बैंक काउंटर पे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नए हैं, उन्हें भी ये नई चीज़ मिली है ना. हाँ, जैसे कि इमरान साहब ने भी इसके बारे में कहा कि उनको भी वो ट्रेन कर रहे हैं. उनको भी ट्रेन कर रहे हैं. और कुछ लोग वहाँ पे, कुछ जो ब्रांचें हैं वो ऑनलाइन है भी नहीं है. सही बात. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है. कुछ पेमेंट लगा रहे हैं इधर से, लेकिन वो ऑनलाइन ही है, पेमेंट वहाँ पे पहुँचती नहीं है. उन्हें ये भी प्रॉब्लम आ रही है. देखो जी, ऑनलाइन में तो ये है ना कि उनको वो जो अगर बैंक की पेमेंट है, हाँ जी, तो जैसे कि इमरान साहब ने पहले ही बताया कि उनको बैंकर्स ड्राफ्ट पोस्ट करना पड़ता है. हाँ जी.
अगर यूबीएल टू यूबीएल तो वेरी नेक्स्ट डे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. जो क्रॉस बैंक है, जो ऑनलाइन है तीसरे दिन, जो नॉन ऑनलाइन है वो पोस्ट में 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं. हाँ जी. तो इसलिए इमरान साहब या हमारे ऑफिस में या आप भी अपने कस्टमर को एडवाइस करते होंगे कि क्रॉस बैंक जो नॉन ऑनलाइन है उनमें 4 to 5 वर्किंग डे लग जाते हैं. हाँ जी. उसमें जो वीकेंड काउंट नहीं करना चाहिए. वीकेंड नहीं काउंट करना चाहिए. सही. तो ये फ्राइडे सैटरडे आपको पता है, ये तो वहाँ बैंक वाले सही बात. सैटरडे वो बंद होते हैं, तो ये ट्यूसडे में पेमेंटें जा पड़ती हैं. हाँ वही ना, जो इंफॉर्मेशन सही देंगे तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमें भी नहीं प्रॉब्लम. अच्छा जाद साहब, ये मनी ट्रांसमिटिंग के अलावा आपके ऑफिस में और भी कुछ आप कारोबार कर रहे हैं? हमारा कारोबार मेनली है ड्राइविंग का. ये स्कूल ऑफ मोटरिंग. स्कूल ऑफ मोटरिंग ड्राइविंग सिखाते हैं. उसके बारे में ज़रा तफसीलन कहेंगे कुछ? मोस्टली अगर किसी को भी कोई ड्राइविंग का मसला है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है. ड्राइविंग सिखाते हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं, 20 इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं. तो जिसको भी कोई ज़रूरत है ड्राइविंग के बारे में हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. आपका ऑफिस के बारे में बताएंगे, आपका ऑफिस कहाँ है? हमारा ऑफिस लॉन्ग साइड में है, रेनफोर्ट स्ट्रीट, नंबर 11 रेनफोर्ट स्ट्रीट. ये जो मार्केट लगती है उसके बिल्कुल मार्केट के सामने गली में है. अच्छा अच्छा. नेक्स्ट टू होम. हो सकता है हमारे स्टूडियो से आपके पास कोई आए, अच्छी बात है ना. तो उनका आप जरा प्रॉपर केयर करने. बिल्कुल. बल्कि उनको फ्री सर्विस देनी है आपने. फ्री सर्विस देंगे. थ्योरी का हम सिखाते हैं, जो लोगों को पढ़ना नहीं आता जी जी, वो कंप्यूटर पे वॉइस ओवर होती है. इसमें जो ये ड्राइविंग टेस्ट पास करने में बहुत सारे नए कवानीन आए हैं, ज़रा आप नाजरीन से कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? नहीं, ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है हाजर्ड एंड परसेप्शन पे. वो ट्रेनिंग करते नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं. तो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उन्हें क्या पता कि वहाँ पे क्या आगे सामने आएगा. तो अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं, हमारे ऑफिस में हम प्रैक्टिस करवाते हैं. प्रैक्टिस करवा के जो भी लोग प्रैक्टिस करने आते हैं और टेस्ट के लिए जाते हैं वो पास हो जाते हैं. ये प्रैक्टिस के बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसीलन नाजरीन को बताएंगे? ज़रूर बताते हैं. ये होती है जैसे आप हाजर्ड परसेप्शन होती है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं जी, आगे कोई भी डेवलपिंग हाजर्ड, कोई जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है तो लोग उस पे उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो डेवलपिंग हाजर्ड होती है. अच्छा ठीक है. लोग समझते हैं कि ये वहाँ पे ये जो समझते हैं कि ये गाड़ी जब वो आके रुकेंगे तब, लेकिन ये तो हाजर्ड बन रही है ना. डेवलपिंग हाजर्ड को आपने देखना है, वहाँ पे क्लिक करना है. इसके पॉइंट्स होते हैं, 5 से शुरू होते हैं जी. जैसे कि एक विंडो बनी होती है, उसमें 5 4 3 2 1 होता है. कुछ लोग जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो 5 से पहले ही क्लिक कर देते हैं क्योंकि उन्हें पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो पहले ही कर देते हैं. कुछ लोग जो लेट करते हैं बहुत ही एंड पे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता. प्रॉपरली टाइम पे वो क्लिक करेंगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर 4 फिर 3 फिर 2 1. जाद साहब, कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में जिसको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप कोई फैसिलिटेट करते हैं उनको? ये वॉइस ओवर होती है उसमें ना, उर्दू में. हमारे पास सीडीज हैं, उर्दू की हैं, बंगाली की हैं, अरबी की हैं, और इंग्लिश जो पढ़ नहीं सकते इंग्लिश की भी वॉइस ओवर है. जब टेस्ट बुक करवाते हैं तो वो इस तरह बुक करवाएं कि उर्दू वॉइस ओवर बुक करवाएं, तो फिर वो आप सवाल को आपको पढ़ने नहीं होते, सुनने होते हैं. और फिर जवाब जो 4 जवाब हैं वो भी आप उसमें उन पर क्लिक करते जाएं, सुनते जाएं बारी बारी, जो आपको सही लगता है उस पर क्लिक करते जाएं. ये तो फिर काफ़ी आसान कर दिया आपने. बहुत अच्छा हो गया, बहुत आसान है, लेकिन लोग ये पता नहीं है ना. अगर पता होगा तो फिर वो उसी तरह कर सकते हैं. आप ये बताएं, जब से आपने यूबीएल के साथ, ये केस मनी के साथ काम करना शुरू किया, पहले भी आप काफ़ी अर्से से हाँ जी, तो इसमें आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा है? बिजनेस काफ़ी अच्छी सर्विस है, लेकिन वही आपकी बात तो यही है, अभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन सही तरह देंगे तो उन्हें ये अच्छी तरह पेमेंट मिलेंगी और टाइम पे मिलेंगी, तो फिर ऑब्वियसली वो खुश होंगे. मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट सेल वाइज हुई है या नहीं हुई? इम्प्रूवमेंट हो रही है जी, काफ़ी बेहतर हो रही है. लोग अभी लोगों को पता नहीं है, अब पता चल रहा है. तो जैसे जो पेमेंटें लगा रहे हैं, असल में बात यह है कि आईडी कार्ड लोगों ने नहीं लिया हुआ. जो रिसीवर होते हैं उसका आईडी कार्ड चाहिए होता है, कार्ड का नंबर चाहिए होता है. ज़्यादा से इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं भी आपको पता इसी लाइन में है ना, आप भी बताएं ना. तो कोई जब सीनियर कस्टमर नाज़रीन हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं जी आईडी कार्ड बेनिफिशियरी का है, तो वो कहते हैं नहीं.
तो सिंपल सी आसान सी बात है, उससे बेनिफिशियरी का टेलीफोन नंबर लें, हाँ जी, फ़ोन करें, मेरे हिसाब में 2 या 3 मिनट में आप उसका नंबर मिल जाता है। हाँ जी, क्योंकि सही पाकिस्तान में हर आदमी आईडी कार्ड वो कैरी करता है, चाहे वो ओरिजिनल है सही या बात। वो उसने फोटो कॉपी करके रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल इस टेक्स ओनली मिनट और 2 एंड फ़ोन कॉल पे भी आपको 5 या 6 या 10 पैसे कॉस्ट करते हैं। तो ये आपको अपने कस्टमर को ज़रूर फैसिलिटेट करना चाहिए। ये अब कर रहे हैं ना इस तरह, वो हम लोग ये पाउंड वाले कार्ड बना रहे हैं, जी, तो वो कार्ड दिया करेंगे उनको, जो भी कस्टमर आता है उन्हें कार्ड दिया करेंगे। इसको ज़रा अपने फ़ोन को बंद कर लें, ज़रा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। हाँ जी, मैं आपके पास दोबारा फिर इंशाल्लाह अभी आपको दोबारा थोड़ा सा इमरान भाई से भी क्वेश्चन कर लें। इमरान, यू नो दिस एफएसए कमिंग इनटू फोर्स, व्हाट्स द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन टू द एजेंट्स? Well, depending on, well, the deadline was there, 31st of July, which is expired by now. But that was if you had registered your business as a money service business, MSB, after the time of 25th of December 2007. So if you were, in other words, if you were registered thereafter, you would have had to submit your application to the FSA by 31st of July. If you prior to that, you have a threshold, you have a transitional period for small institutions, which I'll explain in a minute, 2010, and for authorised institutions, 2011. However, everyone has to have by the 1st of November in place the FSA's recommended code of conduct. Under that, there's certain policies and procedures which you must have implemented, and you also must have in place procedures for complaints handling, and you must advise your clients on how they can make a complaint to the Financial Service Ombudsman, but you must have them in place by November. So these people licenses are getting expired, or the new people are coming for applying for the new MLR 100. Do they require this FSA registration Oh, as yes, well? they will do, yes. Would you like to explain a little better? I mean, I think you have to be careful now. I mean, if you are thinking about entering the money service business or home remittance, which comes under money service business, is it profitable for you to be registering with the FSA with the first registration fee for a small payment institution? That is, if your turnover is less than €3 million per month, you're classed as a small payment institution. It's £500 registration fee for the FSA, and then on top of that you have registration fees for your MLR 100 and 101, which I believe is £175. So to begin with, you're looking at just under £700 for your licenses if you're approved, and then there will be a renewal subscription for both every year. So if you're a small outfit just doing, as you know, a small amount of remittance, is that cost worth doing home remittance? So it means for the small, very, very small people. Yeah, not only that, you know, when the FSA comes in, I mean they're already here now, but when it's fully enforced, and when the code of conduct has to be in place, it's going to be difficult for people who aren't doing stuff correct to keep running, you know. I mean, just the documentation and the directive issued from the FSA and the framework that we have to work under. If you just look at that document, you know, you have to take it serious. So you've got to ask yourself, can I undertake this? Can I comply? Can I afford to do this business anymore? And that's where it's at. It's standardizing everything, isn't it? It's making things, the movement of money as transparent and, you know, as clean as possible, I think, under the FSA banner. And you know the FSA, what they are, the Financial Service Authority. I mean, you know, the FSA, when it comes in force, the people who are working under the compliance and very professional people, they're going to be benefited, most of them, won't they? Like I said, yeah. I mean, it's going to standardise everything. You will have to work to a standard, won't you? You'll have to work under the framework of the FSA, which, you know, without getting in too deep into it, a certain directive was passed by the European Union that doesn't just apply to us, but it applies to other member states. And in the UK, the FSA were chosen to deliver this directive. In other states, they'll have their own governing bodies or whoever they nominate to do it.
but it's standardising not just in the UK but other parts of Europe as well. Which, yeah, I think people who don't take the compliance serious, who perhaps don't have the resources to undertake what is required, will find it very difficult to continue. Thank you very much, Imran. We are running out again, as usual, running out of time. I would like to ask Mrs. Hassab کہ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اپنے بزنس کے بارے میں؟ موسٹلی ڈرائیونگ کے بارے کہتا ہوں کہ لوگ جب ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی چلانی شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی گاڑی تبھی بندہ چلا سکتا ہے جب آفیشلی آپ کے پاس پراپر لائسنس ہو. تو ابھی ان کے پاس پروویژنلی ہوتا ہے اور ٹیسٹ اپلائی کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تھیوری پاس کر لیتے ہیں اور ڈرائیونگ کرنی شروع کر دیتے ہیں اکیلے ہی. تو اگر اکیلے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو انہیں وہ انشورنس کور نہیں کرتی, لائسنس نہیں ہوتا, وہ اتنے پوائنٹ لگا دیتے ہیں آپ کا, وہ تھیوری بھی ریووک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر پلیئنگ ود فائر. ہاں جی ہاں جی, وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر لوگوں کے لیے. کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے. پچھلے دنوں ایک لڑکی نے مجھے فون کیا, اس نے ٹیسٹ اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کو. اس کا فالٹ نہیں تھا, کسی اور کا فالٹ تھا. لیکن اینڈ پہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہے آپ کا بلیم, آپ پہ بلیم آ جاتا ہے, آپ کا ہی فالٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس. ناظرین, زاہد صاحب جو آپ سے ابھی یہ انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے. جب تک آپ کو لائسنس نہ مل جائے, پلیز ڈونٹ ڈرائیو. اٹس ٹو ڈینجرس فار یور سیلف اینڈ فار ادر پیپلس. ناظرین, ہمارا اس پروگرام ہمیں آرڈر مل گئے ہیں کنٹرول روم سے کہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 11 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.